Hello, good evening, namaste to everyone. In this cold winter night, we are here again with yet another episode of Med Talks, which we bring you every day with a new and interesting topic. Today, also, we are coming up with very interesting discussion with one of the eminent endocrinologists. Before that, we should go to the news of the day. आज का हमारा एपिसोड नंबर जो है वो 792nd एपिसोड है। दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी गुड फीट। डॉक्टर के अग्रवाल जी ने ये जो एक लिगेसी शुरू की है, इसका हम हर रोज एपिसोड लेकर आते हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और हेडलाइंस आज के जो कह रहे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले डब्ल्यू जो है, दे हैव अपॉइंटेड डॉक्टर जेरेमी फेरर एज द चीफ साइंटिस्ट। तो उनके जो चीफ साइंटिस्ट है उनका नाम जेरेमी फेरर है और उनको अपॉइंट किया गया है। NTAGI chief has said that the vaccine against cervical cancer will be included in the national immunization program by mid 2023। यही वो न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का जो प्रिवेंशन है वो पॉसिबल है इम्यूनाइजेशन के द्वारा। और ये जो हमारी अनमैरिड गर्ल्स हैं इनमें भी ये वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हमारी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इस वैक्सीन को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी आसान हो गई है इंडिया में कोविड की वैक्सीन के बाद। तो ये वैक्सीन जो है सस्ते में अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगेगी और उसके बाद आसानी से जो है उपलब्ध भी होने लगेगी। यही कारण है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन को इंक्लूड किया जाएगा, और ऐसा कहा जा रहा है बाय मिड 2023 वी मे बी एबल टू इंक्लूड इट into the universal immunization program. Center has said that around 15.23 lakh living with HIV people are given ARV medicines, which is antiretroviral medication. So हमारे यहाँ जितने भी लोग HIV के साथ रह रहे हैं उनमें से 15.23 लाख जो लोग हैं उन्हें ये मेडिकेशन का जो है फायदा दिया जा रहा है। Medical staff in China's hospitals say that COVID-19 is ripping through their ranks. अब ये चाइना की जब भी बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है उनकी क्या बात सच मानी जाए और क्या झूठी, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि मीडिया की तरफ जो न्यूज़ है वो कितनी सच्चाई से वो पहुँचाते हैं। लेकिन हाँ, कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे हैं, लोग उससे ज़रूर तंग आ चुके हैं। US FDA approved Mirati's lung cancer drug, which is adagrasib, a drug targeting the mutated form of gene known as KRAS that occurs in about 13% of non-small cell lung cancer. प्रिसिशन मेडिसिन का ज़माना है। हमने देखा है प्रिसिशन थेरेपी जो है, टारगेटेड थेरेपी जो है कैंसर में काफ़ी हद तक आ चुकी है, और रोज़ जो है नए-नए मॉलिक्यूल्स पे काम होता है, स्टडीज़ होती हैं, और वहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल जो है अच्छे साबित होते हैं, उनका मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल में किया जाता है और मार्केट में लाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि केरास की जो म्यूटेशन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में होती है, उसके लिए ये मेडिकेशन यूज़फुल साबित होगी। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट वुमेन शुड नो अबाउट व्हाट वुमेन शुड नो अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मैं अपने गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है डॉक्टर सप्तर्षि भट्टाचार्य। गुड इवनिंग डॉक्टर भट्टाचार्य। गुड इवनिंग। इनके बारे में बता दूं, ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट द इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली एंड डायरेक्टर ऑफ ई हेल्थ डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी सेंटर इन नोएडा। He is an executive committee member, Endocrine Society of India, and founder secretary of the Delhi Endocrine Society. He has won the President's Award of Appreciation in 2021
for his work from the Endocrine Society of India and has served as the president of the Society for Promotion of Education in Endocrinology and Diabetes, which is the SPEED. He has over 60 publications in peer reviewed national and international journals of repute. Thank you, Dr. Bhattacharya, for sparing your time with us. Thank you. तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो है जेस्टेशनल डायबिटीज इफ वी थिंक अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज एंड वी ब्रेक दिस टर्म इनटू टू gestational means that a particular person is undergoing their pregnancy and diabetes obviously means the affection of the disease which is abnormal handling of sugar in the body. तो ये जो gestational diabetes है एक्चुअली होता क्या है? Thank you, Dr. Vinny. A very good evening to all the viewers who have joined today. So, this is gestational diabetes, एक बहुत ही कॉमन बीमारी के as it has come up as a very common disease. So in pregnancy what we see, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास whenever you visit your gynecologist, आप वहाँ पे जाओगे तो most of the gynecologists will ask you to get your sugars checked. So gestation normally we know कि diabetes type 1 diabetes होता है, type 2 diabetes होता है. जेस्टेशनल डायबिटीज एक अलग तरीके का डायबिटीज है जिसमें ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, स्पेसिफिकली आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते हो जाने के बाद हार्मोनल चेंजेस ऐसे होता है जिसमें बॉडी का इंसुलिन का काम करने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है. इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. सो हार्मोनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी क्रिएट a condition where there is a predisposition to develop high blood sugar levels. So इसी को हम gestational diabetes बोलते हैं. राइट तो जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में हमने जाना कि ये क्या होता है और आपने बहुत अच्छे से हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये समझाया किस तरीके से ये 24 हफ्ते प्रेगनेंसी के बाद जो है एक महिला को हो सकता है. जेस्टेशनल डायबिटीज किन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है? क्या ऐसे कुछ अफेक्शन है फीमेल्स में जिनमें कि ये ज्यादा पाया जाता है? कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या किसी भी महिला को जो है जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है? और यदि उसे ऐसा होता है तो क्या कोई सिम्टम है जिसकी वजह से उसके अलार्म जो है वो रिंग आउट होने चाहिए और उन्हें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए? Again a very important question. So अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन पॉपुलेशन एज ए होल इज प्रीडिस्पोज टू डेवलप डायबिटीज. तो डायबिटीज चाहे जेनेटिक रीजन हो, मे बी सुपर इम्पोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, तो सब कुछ मिला के द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इज वेरी हाई. सो अगर कुछ एथनिक वेरिएशन करके जब जो हम साइंटिफिकली ये टर्म यूज करते हैं समझाने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के पीपल किसी एक बीमारी की तरफ अगर प्रीडिस्पोज्ड है तो डेफिनेटली इंडियंस एज ए होल दे आर प्रीडिस्पोज्ड टुवर्ड्स डायबिटीज एंड सो ओवरऑल दे हैव इट हायर चांस ऑफ डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज, जो ऑलमोस्ट 1 in 5 या 1 in 10 वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में ये मिलता है. अब इसमें भी over that, if a lady before conception is overweight or obese, जिनका वेट ज्यादा है, एक पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम करके एक बीमारी होता है. अगर किसी लेडी को पहले से ये पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम करके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनको ये होने का चांसेस ज्यादा है. अगर फैमिली में फादर मदर या सिस्टर या ब्रदर को अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो तभी भी ये होने का चांसेस ज़्यादा है. कुछ कुछ सिचुएशंस में देखा जाता है अगर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर का बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है तो इन लेडीज को भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने का टेंडेंसी रहता है. सो इंडियंस एज ए होल दे आर प्रीडिस्पोज, and on top of that if you are having those particular characters or features or have conditions, then the chance of gestational diabetes even goes up further.
जी, आपने बताया कि वज़न जिन महिलाओं का ज़्यादा होता है, वो प्रीडिस्पोज़्ड होती है। तो वज़न एक ऐसी बीमारी है, जो हर नई बीमारी को जन्म देती है, ये हमने देखा है। हार्ट डिज़ीज़ भी इंडियन जो लोग हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती है और इंडियन लोगों को हार्ट अटैक कम उम्र में होने के ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशंस। वहीं हम देख रहे हैं कि इस बात को हम नहीं नकार सकते कि प्रेगनेंसी में महिला का वेट ज़रूर बढ़ता है। तो अगर हम देखें कि आप बोल रहे हैं वेट ज़्यादा होना प्रेगनेंसी के दौरान और वहीं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का होना, तो किस वेट से एक अलार्म बेल रिंग होना चाहिए? क्या हर वेट गेन एब्नॉर्मल है या कोई पर्टिकुलर हमें एक वेट गेन का एक स्केल लेके चलना चाहिए कि इतना वेट गेन ठीक है, इससे ज़्यादा खराब है। Again, a very important question. Obviously, there are two factors. एक baseline weight, pre-conceptional weight क्या था? अगर किसी को usually the average weight gain during pregnancy can vary from around 10 to 14 kgs or 16 kgs. If somebody is underweight before conceiving, किसी का अगर weight कम है तो उनके लिए weight gain करने का space थोड़ा ज़्यादा है. किसी का अगर वेट पहले से ही ज़्यादा है, जैसे इफ समबडी इज ओवरवेट और ओबीस, देन मे बी 8 केजी और 10 केजी और लेसर वेट गेन इज रिकमेंडेड. एवरेज वेट गेन इज लाइक 10 to 12 केजी विच इज सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर किसी को यूजुअली जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई वेट गेन नहीं होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माना जाता है कि वेट मोर और लेस विल रिमेन सेम. सो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज अ टेंडेंसी कि धीरे धीरे वेट बढ़ने का टेंडेंसी होता है. सो इफ समबडी, देयर आर स्पेसिफिक नॉर्म्स के इतने टाइम में इतना वेट बढ़ना चाहिए, दैट यू नीड टू कंसल्ट विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट. Even so, if somebody is having a trend which is faster than that, then the chance of gestational diabetes actually increases. So the baseline weight and the rate of gain of weight during the early part of pregnancy both helps to determine whether there is a chance of developing gestational diabetes or not. जी, एक तो आपने बताया ये सिम्पटम हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का बढ़ना और तेज़ी से बढ़ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक अलार्म बेल है। इसके अलावा क्या कोई सिम्पटम है जिससे महिला को पता लगेगा कि हाँ, उन्हें डायबिटीज़ की शायद शिकायत हो रही है या उन्हें ज़रूर एक चेकअप के लिए जाना चाहिए? देखिए, दिस इज जेस्टेशनल डायबिटीज आम तरीके का डायबिटीज से अलग है. नॉर्मली हम लोग जो डायबिटीज का डायग्नोसिस पे हम पहुंचते हैं, उसमें हम फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या ग्लूकोज देने के बाद ब्लड शुगर का वैल्यू 2 घंटे के बाद 200 के ऊपर होना चाहिए. एच के ऊपर एच जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है वो 6.5 के ऊपर होना चाहिए. तो ये पैरामीटर्स जेस्टेशनल डायबिटीज में लागू नहीं है. ये दिस इज ए दीज आर कट ऑफ्स ओनली एंड ओनली फॉर नॉन प्रेग्नेंट conditions. In pregnancy, the cutoffs are different. There are Indian guidelines, there are international guidelines, there are WHO guidelines, which are much low, because normally normal physiology of pregnancy is that the baby is drawing glucose or nutrition from the mother. Since the mother is supplying glucose and nutrition to the baby, the sugars actually tend to be much lower side than in normal conditions. तो इसलिए अगर किसी का शुगर फास्टिंग में 92 के ऊपर है, या खाने के ग्लूकोज के 1 घंटे के बाद 180 के ऊपर है, और खाने के ग्लूकोज के 2 घंटे के बाद 153 ऊपर है, देन वी लेबल somebody as gestational diabetes, and this will only and only come up on screening. So unless किसी को ग्लूकोज पिला के, इवन देयर आर इंडियन वेज ऑफ डूइंग इट, जिसमें हम 2 घंटे के बाद ग्लूकोज पिलाने के बाद टेस्ट करते हैं. देयर आर इंटरनेशनल गाइड पैराम वेज ऑफ डूइंग इट, जिसमें थोड़ा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग है. बट मोर और लेस अगर 2 घंटे के बाद शुगर 140 150 के ऊपर pons die after glucose, that is being labeled as gestational diabetes, and this sugar is not going to cause any symptom. So अगर हम वही सिम्टम के लिए वेट कर रहे, नहीं हमें बाकी शुगर के टाइम में जो सिम्टम्स होता है, अच्छा किसी का प्यास ज्यादा लगना, यूरिन बार बार होना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स से जेस्टेशनल डायबिटीज का कोई क्लू नहीं मिल सकता.
अगर ये symptoms are, that are indicators of overt diabetes, which is slightly different from gestational diabetes. If gestational diabetes can only be diagnosed on screening, so it's recommended that irrespective for Indians, we should screen everybody after 24 weeks to rule out gestational diabetes. And in fact, we should screen even at first trimester of pregnancy on first visit, because there are so many younger women who have underlying diabetes, इनको पहले से ही डायबिटीज चल रहा होता है, पता नहीं चलता, और वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम शुगर अचानक चेक होता है, पता चलता है 200 250 300 है. तो उनको हर एक इंडियन women who are planning pregnancy should ideally get it before. If that has not happened, at least should get it immediately after conceiving to rule out any pre-existing underlying type 2 diabetes that can be symptomatic. Gestational diabetes only diagnosed on screening usually will not cause any symptoms. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि एक महिला को यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ डेवलप होती है, कई बार वो सिम्पटम को जो है जन्म नहीं देती, क्योंकि उस ब्लड शुगर के ऑलरेडी जो है मदर यूज़्ड टू होती है, और क्योंकि बच्चा सारी न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से ही निकालता है, ऑल द न्यूट्रिशन गोज़ फ्रॉम द मदर टू द किड. That is the reason usually the parameters, the sugar levels are lower inside the mother, and hence these values are lower for diagnosis. यही कारण है कि हर महिला का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है. इसके अलावा डॉक्टर भट्टाचार्य हमें ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी एक शुगर लेवल का करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन विमेन on the whole are very predisposed to developing diabetes. ऐसा अगर नहीं हुआ है, please get the sugar level done once you know that you are pregnant. स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में हमने जाना, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आपने समझाया, इसके सिवा कोई और टेस्ट भी होते हैं डायग्नोसिस के लिए? नहीं, यूजुअली जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही होता है. अगर किसी महिला को अल्ट्रा प्रेगनेंसी के टाइम अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसमें तो फ्लूइड जो होता है प्रेगनेंसी में, जो यूटेरस के Amniotic fluid. amniotic fluid, अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है या बेबी का रेट ऑफ ग्रोथ इज मोर देन नॉर्मल, so these are indirect markers that there can be underlying diabetes and gestational diabetes and there is need to screen. But usually वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए कि हाई शुगर का ये सारे लक्षण बेबी को आना शुरू हो. उसके पहले ही रूट स्क्रीनिंग से ये हमें डायग्नोज कर लेना चाहिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं है. सो obviously ultrasound will give some idea, but that is not that is we are only picking up complications by ultrasound. So if we want to diagnose, it has to be done routinely after 24 weeks for almost all women with pregnancy. Right. So again, emphasis of the fact that after 24 weeks, glucose tolerance test should be done irrespective of the previous diabetic status, and every woman should get it done. हमने जाना कि डायबिटीज किस तरह से प्रॉब्लम कर सकती है एक महिला में, वहीं एक प्रेग्नेंट महिला जो होती है वहां पे एक जान नहीं होती, दो जान पल रहे होते हैं. सो व्हाट आर दीज इल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग दिस जेस्टेशनल डायबिटीज फॉर द बेबी? Again, gestational diabetes ऐसे बीमारी है which is fully treatable. So if we diagnose it at the right time, if we are able to control with life, usually the first line treatment will be diet and exercise. खान पान में सुधार से और थोड़ा वॉकिंग जितना आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको अलाउ, whatever she will allow, if you do it, so that is usually the first line step. And then if it's not controlled, you can get in touch with your with the doctor who is specialized in treating diabetes, usually an endocrinologist or a physician, or even your gynecologist might also help you. So then there can be need for other medications. Usually the treatment, the recommended standard treatment with insulin. Medicines are not usually recommended apart from a tablet called metformin, which is commonly used and is approved in some of the countries.
So the complications can be, as you said, there are two lives involved. So the complications can be either to the mother and or it can be to the baby. मदर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होता है कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ थोड़ा सा जो वेट बढ़ने का टेंडेंसी होता है, फ्लूइड्स ज़्यादा होता है, बाकी प्रेगनेंसी के टाइम सिजेरियन सेक्शन का रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है. सो मोस्ट बाकी हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ ये ज़्यादा रिलेशन हो जाता है. बट predominantly the effect is on fetus, and for the fetus the two most important side effects are the baby starts growing more. तो बेबी का वेट बढ़ने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, the baby gains more weight. That is why if the baby's weight is more than 4 and 4.5 kg, so that is actually not a, no, some people might feel कि अच्छा baby is very healthy, but that is not true. So if the baby is more than 4 or 4.5 kg, there it's called macrosomia, and there is a high possibility that there was uncontrolled gestational diabetes. That is why it has happened. उसके पहले फ्लूइड भी बढ़ना शुरू हो जाता है. मैक्रोजोमिया के साथ बेबी का जो पोस्ट डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, सांस फूलने का टेंडेंसी होता है, शुगर ड्रॉप करने का टेंडेंसी होता है, कैल्शियम बैलेंस में ऊपर नीचे हो सकता है. इवन if it's very uncontrolled, so there is no reason, even sometimes there is fetal demise also. So though we cannot let it linger till that stage. Obviously we need to intervene much before that. So these are the immediate complications. It has long term implications also, both for the mother as well as for the baby. मदर के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है? एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, that is an indicator that there's a very strong chance of developing diabetes in the next 5 years or 10 years. So that is like जैसे हम लोग कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं वो समझने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं. तो इट्स लाइक ए स्ट्रेस टेस्ट फॉर डायबिटीज. अगर प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज हो रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो रहा है, फ्यूचर में डायबिटीज होने का चांसेस आर वेरी स्ट्रांग. यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज अगर होता है तो बेबी, if the sugars are well controlled, if the baby is normal weight, baby is यूजुअली प्रोटेक्टेड. इमीडिएटली डायबिटीज होने का कोई चांसेस नहीं है. बट शुगर कंट्रोल सही रहना, बेबी का ना वेट कम हो, बेबी का ना वेट ज्यादा हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेस्टेशनल डायबिटीज ओवर ट्रीटमेंट में बेबी का वेट कम भी हो सकता है, अंडर ट्रीटमेंट में बेबी का वेट बढ़ भी सकता है. तो दोनों ही नहीं होना चाहिए. अगर बेबी का वेट नॉर्मल हो, इमीडिएटली डायबिटीज होने का बेबी को पास ऑन करने का कोई चांसेस नहीं है. बट अगर बेबी का वेट ज्यादा हो या कम हो, फ्यूचर में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है. जी, तो आपने बताया यूजुअली जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए वो इंसुलिन ही देते हैं और ज़्यादा कोई ओरल थेरेपी देने का जो है गाइडलाइन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है जब भी किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को बोला जाता है कि आपको डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो यूजुअली हमारी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है और हमें लगता है कि अब हम इंसुलिन पे आ गए हैं, हमारी लाइफ़ थोड़ी खत्म हो गई है। तो क्या ये केवल इंसुलिन से ही ट्रीट किया जा सकता है और यदि हाँ, तो इस तरीके से हम इंसुलिन से क्या-क्या फ़ायदे जो हैं हमें होते हैं? Again, a very important question, and there are very many myths about insulin, which is that एक तो बहुत कॉमन मिथ है कि अच्छा एक बार इंसुलिन का जरूरत पड़े, एक बार किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लग गया तो हमेशा इंसुलिन चलेगा. दैट इज टोटली नॉट रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. सो देयर इज नो, कोई मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है किसी को एक बार इंसुलिन लगे फ्यूचर में इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंस आ जाएगा. क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज में जो है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर लिमिटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेगनेंसी इज ए सिचुएशन जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं है. देयर आर टू लाइव्स इन्वॉल्व, एंड सो वी डू मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द सेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. इंसुलिन जो है बॉडी का सबसे नेचुरल हार्मोन है. इंसुलिन हमारे आपके सबके शरीर में है. इंसुलिन पैनक्रियास से बनता है और इंसुलिन से शुगर कंट्रोल होता है. अगर जेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन मदर के बॉडी में तो है, लेकिन इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसुलिन देना पड़ता है. तो अगर हम इंसुलिन मदर को दे रहे
तो इंसुलिन सबसे नेचुरल हार्मोन है जो दिया जा सकता है. इंसुलिन प्रेग्नेंसी मदर के थ्रू प्लेसेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा, इट डज नॉट पास ऑन टू द फीटस. तो इंसुलिन का कोई प्लेसेंटल ट्रांसफर नहीं होता है और इंसुलिन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फीटस के ऊपर नहीं आता है. तो प्रेगनेंसी में अगर डाइट और एक्सरसाइज से शुगर लेवल्स, अगेन इसका शुगर टारगेट्स भी अलग है. सो हम नॉर्मली जो अच्छा किसी का फास्टिंग शुगर 100, 110, 120 में, we for type 2 diabetes or type 1 diabetes we accept it as okay. For post meals we accept it as 140, 150. But international guidelines, Indian guidelines, they are very specific. We know that there is clear cut evidence that if the fasting is more than 95 or the 2 hour post meal is more than 120, which is quite rigid, but actually the sugars in pregnancy are much less than that. सो उसके नीचे शुगर होना चाहिए. तो हमें पहुंचना है किसी तरीके से उस लेवल पे, नहीं तो मदर और बेबी दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. फर्स्ट स्टेप डाइट लाइफस्टाइल. नेक्स्ट स्टेप यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट इज इंसुलिन. दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन. बॉडी का नेचुरल हार्मोन कम दे रहे, बेबी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता. कभी कभी एक मेडिसिन दूसरा भी है जिसको मेटफॉर्मिन कहा जाता है. तो इंडिया में भी हम लोग यूज कर रहे फॉर ऑलमोस्ट 10-15 years. And also it's approved in some of the European countries also, though it's not approved in USA officially. The US FDA, they do not recognize it a medication that can be used during pregnancy. But this medicine is being used, most probably safe, some doubts. But if you talk of insulin, that is the safest, and all mothers who receive insulin after delivery, 95 to 99%, rather 99% of them कैन गो ऑफ इंसुलिन राइट आफ्टर डिलीवरी. उसके बाद कोई इंसुलिन का जरूरत नहीं पड़ता. लेकिन क्योंकि फ्यूचर में डायबिटीज होने का चांसेस है, अगर खान पान में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखा जाए तो वो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा फॉर द मदर टू प्रिवेंट डायबिटीज. सो दैट वी यूजुअली रिकमेंड, बट इंसुलिन विल बी स्टॉप्ड immediately after delivery. Right. So very well explained how we use insulin, why we use insulin, how much we use in pregnancy and gestational diabetes. Very strict guidelines that the fasting should be maintained below 95, and after meals it should ideally be less than 120, which is the recommendation. Many people are associated with us watching this episode. I'll take some of the names. Vinny Jogelkar is there. She's a dietitian. Thank you, Vinny, for joining here. Uh, डॉक्टर एन एस शारदा भी हैं हमारे साथ. रामेश्वर सिंह पनवर जी, गुड इवनिंग आपको भी. अली नजाकत हैं हमारे साथ. उसके साथ केदार जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और विनी जोगेलकर जो हैं, उनका मैं एक सवाल लेना चाहूंगी. They say one of their patients is on 2 gram of metformin and it is the 4th month of pregnancy. Is this dose okay, or this is too high a dose for a pregnant woman? Should she be switched over to insulin? So she says she's her dietitian. Again, so this is a very common situation we face day in and day out. So metformin, the maximum dose is around 2000 to 2500. So that way, met ऐसा नहीं है कि metformin 2000 में is a very harmful dose, or it cannot be given in pregnancy. So that is not true. So if so, it has to be decided by the doctor, the gynecologist, to be discussed with the patient, to be discussed with the dietitian. So with this combination, if the sugars are okay, if the lady has been explained all the benefits and risks related to metformin, and if she is ready to take that risk, then maybe continuing metformin is okay, provided the sugars are again in the normal range. The fasting should be so. Well, most probably what she is talking about is might not be gestational diabetes, because it's only the 4th month of pregnancy. Gestational diabetes हम लोग usually 6 months के बाद देखते हैं. तो 4th month में अगर 2 ग्राम ऑफ मेटफॉर्मिन का जरूरत पड़ रहा है, तो possibility there was some component of underlying diabetes earlier also. Sometimes even we see early gestational diabetes also, but that again, that is slightly a gray area. But as of now, metformin is most probably safe. Insulin might be the safest option. So if somebody wants to shift to insulin, not comfortable with metformin,
doesn't want to take any risk, maybe insulin is the safest option. But there are many ladies who have continued on metformin, and their pregnancies have been uneventful. All right. Dr. N.S. Sharda is asking one of the questions. He says, how PCOS is affected by diabetes? Is there a relationship between the two? And is there any solution for the hair fall, which is often maybe associated with diabetes or PCOS? See, PCOS is a hormonal imbalance related to ovary. So, इसमें there are two, three components. One component is there is a component of ovulatory dysfunction. जो एग बनने का जो नॉर्मल साइकिल होता है, rather एक मैच्योरेशन का जो नॉर्मल साइकिल होता है, that gets disrupted. So that is why the periods tend to get irregular. This is associated with an increase in testosterone और androgen levels. जो मेल हॉर्मोन्स होता है वो फीमेल बॉडी में भी रहता है, बहुत बहुत कम रहता है, लेकिन पीसीओएस में दैट कंसंट्रेशन ऑफ द मेल हॉर्मोन्स is slightly high. It's not very, but even that much of increase in male hormones can cause a tendency towards development of excess hair growth, or which we call a hirsutism, और acne भी होता है, किसी किसी को hair fall भी होता है उससे. So that is another component of PCOS. One component is ovulatory dysfunction. The other component is excess of androgen. The third component, which is sometimes present, is a component of insulin resistance. So many of the PCOS, almost two-third or even more, even maybe three-fourth, will have a component of insulin resistance as a part of PCOS. So this component of PCOS predisposes the lady to development of type 2 diabetes, or even predisposes to development of gestational diabetes. So that is why we see that since it has a component of insulin resistance, that also has indirectly role in gaining weight, that also predisposes to development of diabetes, that also have the indirect role in hair growth. So these are all interlinked, so we cannot dissect out how much of insulin resistance is contributing to excess androgen, and how much of excess androgen is contributing to development of type 2 diabetes or weight gain tendency. So these are all closely interlinked, and so obviously that is how PCOS causes tendency towards diabetes. So if we are able to control weight, ensure that the girl or the lady has regular cycles, has regular ovulation, and also bring down the insulin resistance by diet, lifestyle, and if required, medicine. So most of the complications of PCOS can be prevented. Right. And then they were asking what are the solutions for hair fall? Hair fall, again, the excess androgen related to PCOS is a cause for, so it has a paradoxical effect. The maybe it will cause excess of hair growth on the face or upper lip or certain parts of the body, but on the scalp it has an effect of causing hair loss. So if somebody is having PCOS, so the primary cause is excess androgen. So if we treat PCOS, the androgen levels, so sometimes testosterone report में नहीं आता, क्योंकि changes are very minute. It might not get picked up on the report, but maybe the hair follicle is more sensitive to the effect of testosterone. So that is also another phenomena which is seen in PCOS. So that can also cause excess hair fall. So if it's because of PCOS, the first answer is to correct the excess androgen. After that, obviously hair fall has multiple other factors. So it has a very commonly ignored factor is protein deficiency. So if somebody is vegetarian, not having adequate amount of, say, pulses or milk or sprouts, or so there is a high tendency that protein deficiency, macronutrient deficiency can cause hair fall. Other, if that part has been taken care of, iron deficiency, vitamin deficiency, including vitamin D deficiency, can also cause hair fall. Even local reasons like dandruff can also cause hair fall. So all this need to be looked into, and it should get corrected. But if you are talking about PCOS, excess androgen has to come down, and if you ensure normal ovulation, that will come down automatically. All right. Thank you for that answer.
डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं, आपको बहुत-बहुत नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी बहुत ही अच्छा और अनोखा है। हमने बात की है इंसुलिन की जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। दे वांट टू आस्क कि चॉइस ऑफ इंसुलिन क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग होती है, मिक्स्ड होती है या इसके साथ लॉन्ग एक्टिंग भी देना पड़ता है? किस तरीके से इंसुलिन जो है वो प्लान किया जाता है? Again, slightly more technical question, but since usually we want very, very precise control. So, my personal choice for gestational diabetes is to split down insulin into short acting and long acting insulins. So, we have targets for post meal sugars, which are usually controlled by short acting insulin. अगर ब्रेकफास्ट के बाद शुगर बढ़ रहा है तो ब्रेकफास्ट के पहले शॉर्ट एक्टिंग लगता है, इंसुलिन इंजेक्ट होता है, तो वो शुगर को कंट्रोल करता है. वैलिड फॉर लंच ऑल्सो एंड वैलिड फॉर डिनर ऑल्सो. So usually the requirement for short acting insulin will be all the three times, provided we document that. Also important is monitoring the blood sugar, so we need to have feedbacks related to our insulin dose at each and every step. So only blindly injecting insulin is not enough. So we need to inject insulin, we need to study the blood sugar trend, and we need to adjust our insulin accordingly to reach the appropriate target. So that usually the short acting will take care of the post meals. If the fasting blood sugar is high, if it's more than 95 persistently, so we need to add a long acting insulin which provides a basal coverage, and also the marker for that is fasting blood glucose. So both a combination of short acting and a long acting insulin is usually required. So if you try to mix it into a mixed insulin, we have pre-mixed insulin which mostly come as 30-70 ratio or 50-50 ratio. So it sometimes might fit, it sometimes might not fit. Personally, my choice, I am more comfortable with four doses of insulin, three doses of short acting, and 1 to 2 doses of long acting. Some gynecologists, some doctors some physicians do prefer uh, premixed insulin. Might work okay, but again, the feedback has to be from the blood sugar chart. So you need to document that the sugars are actually in the range of 95 fasting and post meals 2 hours 120 or 1 hour 140. If the values are in that range with the premix, there is no problem. But if it's not, most probably we'll need to shift to do recommend both a combination of three of short acting and 1 to 2 doses of long acting. Yeah, right. So very, very meticulous control required for gestational diabetes as we have seen. बहुत ही टाइट कंट्रोल की ज़रूरत होती है और इसलिए सभी महिलाओं को ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से संपर्क इसीलिए रखना है कि आपकी शुगर लेवल्स जो हैं, प्रॉपर रहें और आपके बेबी को कोई इल इफ़ेक्ट्स इसके ना हो। सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। इनका कहना है यदि एक प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ था, तो क्या ये महिला अगली प्रेगनेंसी में प्रीडिस्पोज़्ड है कि दोबारा ये शिकायत होगी? यदि हाँ, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैसे पहले ही प्लान कर सकते हैं कि अगली बार ये प्रॉब्लम ना हो? कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है या ये तय है कि अगर एक प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, तो दूसरी में होनी ही होनी है? So again, a very very important question. I was going to say that I had missed this point that if somebody had past history of gestational diabetes, last pregnancy में अगर gestational diabetes किसी महिला को हुआ है, तो next pregnancy में होने का बहुत 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 strong chances है. But again, nothing is absolute. So the human body, it's a dynamic thing. So if after delivery somebody works on the right type of diet, starts exercising, is if somebody was overweight or obese is able to lose weight, takes the right food, so maybe the chance of developing कि कोई अगर मान लो कि 10-12 kg overweight, that lady was overweight by 10-12 kgs, and she manages to lose that extra weight, maybe she might not develop gestational diabetes in the next pregnancy. So if you are talking about non-pharmacological measures, so
It's the lifestyle changes, diet, physical activity, right type of exercise, appropriate testing even before next planning to conceive next time. And testing is recommended throughout, in the first trimester, in the second trimester, as well as in the third trimester, if somebody has past history of GDM. But again, you so the chances are strong, but chances are not absolute. So the answer is in the person's hand. If she is sincere with her lifestyle changes, maybe she can prevent it. Right, Helen. We will try to speak in English and try to translate whatever Dr. Saptarshi has told till now. We were talking here about gestational diabetes, which means the presence of diabetes or development of diabetes during the pregnancy state. It has ill effects both on the mother and the fetus, which is inside the mother. Usually, this is tested after 24 weeks, and the screening procedure to test is glucose tolerance test, which we have to do despite the fact that the patient or the pregnant women may not be suffering from any kind of symptomatology. They may not be having any symptoms because the levels of sugar which are diagnostic of this particular condition are not alarmingly high to lead to florid symptoms in these females. So GTT is the test which is used to diagnose this particular condition in the pregnancy. Sometimes we also test blood sugar levels before getting pregnant, and also once you know that you are pregnant, you can go in for the normal sugar level test as well as the 3 monthly sugar indicator, which is the HbA1c levels. Now, if you have developed gestational diabetes, then you have to be very, very vigilant for it and connect to your physician or an endocrinologist who will be there with you throughout the pregnancy to support you. The usual medication which is used is usually in the form of insulin, because that is the safest form of therapy and the best natural possible means of controlling diabetes in pregnant women. Dr. Bhattacharya told that his choice is towards using short acting and long acting combination of insulin because it is easier to control, and we also need to look at each and every level which is before meals and also the fasting levels. So we are targeting a consistent level of sugar which has to be maintained below 95 in the fasting range and also below 120 milligram per deciliter in the postprandial range. So very, very tight control which is needed. Next, we also spoke about the complications which can be there in the fetus, which is in the form of macrosomia, which is a big body, which is high weight in children. It can lead to a lot of problems in the baby, which can be in the form of breathing difficulty and future development of diabetes, which these children may be predisposed to. Extreme conditions can also lead to the loss of baby, unfortunately, but this extreme condition should be prevented and it should be diagnosed very well in advanced in pregnant women. Dr. N.S. Sharda asked about the possibility of the hair loss in these patients who have diabetes as well as PCOS, which is a condition of insulin resistance in women and problems with ovulation. So these women have excess of testosterone and the male hormones which need to be controlled, which could be contributing the hair loss. So the primary mode of controlling hair loss is taking care of the excess male hormones as well as taking care of the nutritional problems which these people are predisposed to. So, next, we have very well summarized what we have talked till now. And also, we spoke about the non pharmacological measures of controlling these conditions, which we all know is weight control, good amount of exercise, eating healthy, balanced diet, and getting rid of the stress. Apart from this, if anyone has any kind of queries and questions, they can ask in the comment section. I will try to answer each and every question which is asked. We have Rameshwar Singh Panwar, who is trying to ask what advice and treatment will you advise for a diabetic baby and what are the precautions? For a diabetic baby,
for the baby if they develop diabetes? So first of all, what we need to understand, after delivery baby का मदर से कोई डायबिटीज ट्रांसमिट नहीं होता है. रादर अगर किसी का अनकंट्रोल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज मदर को है, so the baby's pancreas tends to produce the sugar passes on from mother to baby, but the insulin does not pass on from mother to baby. So baby will have extra sugar in their circulation from the mother, and the baby's pancreas which is intact, that will secrete extra insulin. So what that extra insulin will do, they will maintain the sugar in the baby, but extra insulin has a growth promoting effect on the baby also. That is why the baby fetus tends to gain more weight. And after delivery, this extra insulin, what it does is it keeps on acting for the next 1 or 2 days, and that so the baby tends to develop a low sugar after delivery. So baby usually does not have high sugar after gestational diabetes. So if there are very rare cases, one in millions, neonatal diabetes किसी किसी baby को होता है, but those are totally different from gestational diabetes. These are genetic causes, some defects in genes, not related to gestational diabetes. So gestational diabetes will not cause diabetes in the baby. Rather, after delivery, the baby might go into hypoglycemia. So you need to monitor his or her sugars. If some children develops diabetes at the age of 3 years or 4 years or later, so most probably we need to rule out type 1 diabetes, which is the commonest cause in young children. Sometimes obese थोड़ा सा जिनका वेट ज्यादा है बच्चों में, कुछ देर बाद जाके उनका 12-15 साल में किसी को टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाता है. बट यूजुअली चिल्ड्रन टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन में ज्यादा होता है. टाइप 2 आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि some children are gaining a lot of weight, they are not exercising, sitting in front of computers, attached to their mobiles. So all this should be discouraged right from the beginning, so that the chance of development of metabolic complications in future is less. All right, so we have spoken about gestational diabetes. हमने आज बात की है gestational diabetes के लिए. कुछ ही 5 ऐसी चीजें आप बताइए जो कि हर महिला को जाननी चाहिए डायबिटीज के बारे में, या इन पर्टिकुलर gestational diabetes के बारे में. 5 points in particular. So okay. So my suggestion will be that anybody who is having family history of diabetes or obese or overweight or PCOS, first of all, or having past history of gestational diabetes, so conventional risk factors of diabetes अगर किसी महिला में है, and if she is planning a family, first of all get your sugars checked before conceiving. So that is very important in Indian setting. So if you have risk factors, first check your sugars, then if it's okay, then plan your family. Next, immediately after conceiving, sugars should be checked during as early as possible, because there is large number of ladies we see in current practice who have undiagnosed type 2 diabetes, and they come with very high sugars during first trimester. So that can have mm, multiple negative effects, including congenital malformation. Gestational diabetes occurs later after 24 weeks, so it does not cause congenital malformation, it causes other problems. But early part of diabetes, if the sugars are high, that can cause congenital malformation related to diabetes. So sugars should be rechecked in after conceiving to rule out a pre-existing diabetes, and if it's diagnosed, should be treated with insulin. Next, 24 weeks or later, all pregnant ladies should undergo tests with a oral glucose tolerance test. There are standard Indian ways, international or WHO approved ways. You can, whatever your gynecologist is prescribing, you can follow that. And if it's diagnosed, you need to take appropriate changes. Number four, the first line treatment for gestational diabetes is uh, is lifestyle change, diet. If your gynecologist allows you to roam about, अगर कोई आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसमें आपको चलने फिरने में कोई रेस्ट्रिक्शन है, लाइट वॉकिंग इज ऑल्सो रिकमेंडेड. If there are specified targets, if the sugars are not reached, then
Insulin, sometimes a tablet called metformin is also used. Insulin, as of now, if the lifestyle is not able to control blood sugars, remains the safest form of therapy for gestational diabetes, and it does not cause dependence in any way. Number four, so fourth point, if somebody requires insulin, so during gestational diabetes, so after delivery, in almost in all cases it can be discontinued. The final point, gestational diabetes has implications for mother as well as the baby in the long run. So if somebody is having gestational diabetes, the chances of future diabetes is very, very high. After 6 weeks, should be screened again to rule out that the diabetes has not persisted. So, a oral glucose tolerance test or a fasting sugar or an HbA1c should be done after 6 weeks. For the baby also, if gestational diabetes is not properly treated, the chances of metabolic complication in future can be a possibility. So I'm not discouraging anyone. I'm not trying to create a dim picture, but this is a thing which is totally controllable. But if the mother is having uncontrolled gestational diabetes, we know there are transgenetic changes. It's not that the baby will become diabetic right after birth, but the chance of having excess weight, having cardiovascular disease, having future diabetes, having future obesity. So all usually goes up if the gestational diabetes is not properly controlled. So controlling gestational diabetes and following checkup after that has implication, long-term implication, both for the mother as well as for the baby. All right. Thank you so much for explaining us very, very lucidly gestational diabetes, how it can be diagnosed, what can be the symptomatology, what are the complications related to both mother and the fetus, and how it can be treated. Thank you so much for sparing your valuable time with us, Thank Dr. Bhattacharya. A very small token of appreciation from us, which Prateek is going to show you. This is a certificate for spending your valuable time with us tonight. I wish you. everybody a very good night, and the winter nights are especially, special for all of us. I wish you a very good night. Tomorrow we will come again with yet another episode of Med Talks, wherein we bring you very, very important health topics every day. So, Jai Thank Hind you. and good night.